medium or mid-level, middle level. And the third one, and generally the rain-bearing clouds are high-level clouds. Therefore, there is no rainfall, there is no snowfall, and there is no, what is that? Snowfall से थोड़ा मोटा रहता है ना. Hail and hailstones. बोले को ये क्या? When they fall from such a height, they are in the form of water only. But when they are nearing to the ground, है ना? Based on the surface temperature, only what is getting converted? Water gets converted into flurries. What are flurries? ऐसा पाउडर की तरह गिरता है. इनका क्रिसमस का सीजन में देखो, है ना? हर क्रिसमस में वो ऐसा व्हाइट कलर का वो पाउडर मार के है. Without that they don't celebrate Christmas. अभी मुंबई में जीसस तो बोलता है अभी स्नो गिरेगा. जीसस बोलेगा मुंबई में कहाँ से स्नो आए? नहीं सर, हम लोग स्प्रे लिक्विड सर ऊपर मारते है ना. So we always believe it is a surface temperature which only makes what? Either snowfall or hail or hailstones. So let us write clouds now. The first one that we have already written is cirrus. थोड़ा सा मैं डिटेल में देता हूँ because एग्जाम में आता है. चैप्टर ही खत्म किया. Are those clouds which appears in wool, that is sleek type. Fleecy. Is it fleecy? Fleecy look. वैसा wool को खींचेंगे तो कैसे दिखता है? Same. It is that cloud which is seen at a very high altitude, which are seen at a very high altitude. High altitude का मतलब क्या है? Very good term. But nimbostratus. So high altitude डाला है. अभी we do not know. In that they have confused you. Not confused you. They cleared you. But आपका status में वो नहीं है. So we should remember that. Second one. Cumulus. Most commonly found cloud. हम लोग cloud भी वैसे बनाते हैं cumulus, which represents the shape of a cauliflower. Cauliflower. ये ऐसे दिखते हैं ना, तो हर पिक्चर में ऐसे बनाते हैं ना. और ये बहुत कॉमन है. और ये ऐसे है. फ्लीसी कैसे है? ऐसे है ना? ये फ्लीसी. What did I say? Most commonly found, which appears like a cauliflower shape, and have a vertical structure with their top appears like a dome. With their top, appears like a dome. I have a vertical structure. And its top appears like a dome. The last one, stratus. अरे एक वर्ड एक लाइन में देखा तो कैसा हमारा बच्चा लिख गया. मैं रेनफॉल एक्सप्लेन करता हूँ. माय फेवरेट टॉपिक. Windward, leeward, खत्म. Then you write what is that? Stratus, which are layered in structure and generally found at lower level to the top. Now then relax. Let me explain this. Generally found Lower level to the ground.
Now let me explain what is that? 3 types of rainfall. I can't forget my 8 from 7 we had explained my diagram बनाया मेरा मैम ने उसको wrong बनाने बोला फिर से मैंने diagram बनाया. My favorite subject. The first one, it is relief rainfall. Correct? Second one, convectional है क्या देखो? First one is convectional, second one is relief. Even the diagrams that I drawn during my school days, I can't forget because of the mistakes given by my favorite geography teachers. Cyclonic rains. Oh, look here. अभी तो हम लोग ये भी बोलता है we have now busting of clouds. Have you heard this word busting of clouds? Yes. अहमदाबाद only. You read इंट्रो वाले के पास जाके क्या बस्ट हुआ? There was news. There was news when today yesterday. Oh, some Sometime before. 1 or 2 months ago. Okay. There was that अभी तो इंडिया में बहुत common हो busting है ना cloud burst. I'll tell you. Now let us understand the word convectional. So I remember drawing diagrams like this. Correct? मालूम ही नहीं है ना? ये क्या है? है ना? आप भी बता दीजिए सोचिए. I'll say convectional rainfall. तो बच्चा बोलता है मैं पहली बार देख रहा हूँ. You only drawn the diagram and you only say how would I prove? It is the convectional current. Look here, moving vertically up, and not only two, there are many. So when there is pond of water or stretch of water during a hot, sunny, bright day, there is convection. You understand what is convection? Steam is going, evaporation, and the clouds are formed. And by the time it is 2 or 4 p.m., generally this type of rainfall is heavy. And it will concentrate on that place only. You remember I said 4 o'clock showers? Every day clouds are formed. Every day by 4 condensation is complete. Singapore. Visited? Out of 7 days, minimum 5 days you will get heavy rainfall. But वो 12 से 2 के बीच में आप साल में चलेगा ना 43 quarter ऐसा लगेगा कि बहुत हीट इतना है. I remember मेरा तो 11 बजे जाने का रहता था 6-7 बजे तक wind up करके भाग के आया. By 6:30 I move out of that particular small campus, and by the time I reach house heavy rainfall. मैं तो तभी बस में AC के साथ निकलता है ना. और rainfall इतना heavy रहेगा 7:30, 8, sometime up till 9, but there is no shade of little bit of dampness. You know what is dampness? ठंडा बिल्कुल नहीं रहेगा because that Singapore is considered to be very hot. So that type of rainfall is nothing but it's rainfall. Convectional rainfall. Why? Clouds are formed due to the convectional effect of the sun. Clear? Shall we read and understand, or shall I explain all three? Explain. And now she wants to be on mode. That is it. Please. Now the word relief. People tell me क्या है? हाँ सर आपका लेक्चर होने के बाद बड़ा relief. Okay, over relief. It is normally the mountain. Mountain से क्या relief मिलता है? Relief itself in geography, we say mountains, है ना? Plateaus or plains. But here, which is more responsible for the rainfall? Mountains. So normally you might have seen. अभी ये arrow mark अलग जा रहा है ना? है ना? ऐसा. Evaporation continuously move. By the time the clouds are formed, maybe sometime after you will see condensation has taken place and rainfall. I'll show you 2 sides of a particular mountain. Now, which side you see more rainfall? Towards my left. Correct? I call this as which side? Anybody? Windward side of the. Which side you find less rainfall?
Right. to the right. So that is called as leeward side of the mountain. Yes, why or what is this windward and leeward? I don't understand. Side, downstairs. That's a good side में cloud bands are supposed to be. Very good. Good. Go ahead. Normally, it is the ascending and descending. Ascending evaporation, and as he said, where maximum water is shed is called always the windward side. And by the time the leftover cloud has come here, it is going to descend. Descend. उतरेगा. And descend होगा तो surface temperature hot रहेगा. Condensation होगा कि evaporation होगा? Evaporate होगा. और already इसने पूरा rainfall इधर दे दिया है. So the rest of the showers. So always remember every mountain has a windward side. In Maharashtra only you can see Vidarbha, Marathwada. They do not get rainfall the heavy. So they are on the leeward side of the Sahyadris. Marathi में actually Sahyadri बोलते हैं. English में we call it as Western Ghats. Since they are located on the leeward side, less or more rainfall. Because उसको हम लोग और एक नाम भी देते हैं. Anybody? Leeward side. We call it as rain shadow. Come on, everyone. It is also shadow. Shadow क्यों? हाँ इसको पसंद नहीं है. Shadow. क्यों है shadow? Sir, rain का भी shadow होता है. Shadow नहीं होता है. उधर rainfall नहीं आता. So that is why this is windward and leeward, and it is which part of the rainfall? Relief. Clear? Sir, that is the job. She's frowning with us. Put that on the back. ये बैठ गया. जरूर निकल जाएगा. नहीं जाएगा. अरे फिर बोलेगा. जरूर मिल जाएगा. नहीं. So it will go hit and bounce back. So the last one, we call it a cyclonic rainfalls. And I have this good habit of teaching cyclones very simple. You get. And this is cyclone and this is anti-cyclone. ये तो सुना है ना? Out of these two, which gives rainfall and which gives less rainfall or no rain? Cyclone gives rainfall. Sure. Yes. Absolutely. So let us remove this anti-cyclone. So it is low pressure in the center, and High pressure in the outwards. And the cyclonic rainfalls are very dangerous. And हमारा geographer भी नाम कैसा देता है? Katrina. हाँ नाम दिया है वो लोग ने तो. फिर किसी ने बोला करिश्मा. बड़ी बहन. फिर छोटी बहन का नाम क्या? करिश्मा का छोटी बहन. Actress है ना वो भी. So there was one old man waiting, and they were announcing Katrina, please everyone, please move up. Old man. क्या बाबूजी आपने कटरीना आ गई तो देख के तो जाना पड़ रहा है. बाबूजी आपका सब उड़ जाए. चलेगा हम उससे मिल नहीं जाएगा. तो कटरीना कौन सा? अरे वो फिल्मों में जो काम करती है. आपने वॉइस ऑफ नाम कर नाम से क्या करने का निकल जाता. Fishermen are not allowed to venture into the sea. Fishermen ने क्या बात किया? सर निकल जाएगा सर हवा में लोग. वो फिश के जगह पर फिश बोले क्या भाई धंधा है ना? क्यों? मैंने कल ही बोला था कटरीना जब तक गुजर रही है मारता. So we always believe cyclones are nothing but it is a fun. Fun नहीं sir, danger है. For a geography teacher, like I am making fun out of it. I remember my geography teacher. I love the floods. मैडम I love the floods. मैडम मैं तो दरिया से दूर रहती. क्यों? It brings lots and lots of new soil. मैडम आप कभी फ्लड में गए क्या? मेरी क्या मती मारी गई है कश्मीर की तरफ थी. मैडम क्या मतलब है? I am away from it, so I am enjoying it. मैडम अगर आपके घर पे oh my god, I can't take this. So every time we say this cyclonic disturbances brings the rainfall, which is called as cyclonic rainfall. Shall I show that video or shall we proceed ahead? Video. This
तो ठीक है उसको देख लेते हैं। हाँ, देख लेते हैं भाई हमसे आने वाला है। चलो लिखा आप लोग ने। अब वो हेडिंग लिख दो 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। पहला लिखो कन्वेक्शन। आई एम गिविंग द नोट्स। ज्यादा नहीं दूंगा मैं मार्क कर दे चलो आप पहले देख लो my way of explaining example जल्दी जल्दी ये ब्रेक में क्यों नहीं जाते ये डाल रहे ये डाल रहे डॉक्टर वायरस नहीं सीख रहा था। that's what I'm searching for frontal अरे ये आपको नहीं है ये हमको था frontal है holographic है अपडेट है क्या इसको कन्वेक्शन IQ में क्रिएट फॉर और फ्रंटल ग्रेड फॉर लिखा है सिर्फ से इंडिया ये नीचे कार्टून देखा था holographic किसकी है तुमको ना बाल जरा बांधना नहीं समझने टाइप से रखो precipitation So you just mentioned that you want to learn Python. उसने कोई आईटी बंदा से मैं इसका नाम पाइथन पढ़ा किसी को मालूम है व्हाई इट इज नॉट पाइथन ये बढ़ गया क्या है types of नहीं और हम ऑन कर ब्लॉक करेंगे We all enjoy rain. Have you ever wondered how this water falls on the earth? What form? Any form of water that falls to the earth's surface from clouds is called precipitation. It occurs in different forms. The type of precipitation depends on both the conditions inside the clouds and the conditions of the air between the clouds and the ground. Precipitation normally occurs in 4 forms: rain, sleet, snow, and hail. These forms of precipitation not fall in each and every part of the world. Let's find out which forms are common in the area where you live. So the first one is rain. Drops of liquid water are rain. This is the most common form of precipitation. yeah our Rain can form when tiny cloud droplets combine. Cloud droplets can be millions of times smaller than the raindrops. so distributions are over almost but chapter is pretty. oh yes Einstein history is very good Yes. These some chapters are nice, but others are missing. sometimes क्या और Vedic I will love that word Veda type है ना Vedic civilization and वो Mughalize का आ गया तो बात करो Like Chola Empire is very boring. that is our empire boarding बंद करो यार आज लोग सोलर के बारे में आपने कभी सुना ही नहीं हमने seen that movie called PS1 and PS2 That's why ये movie है वो it is not PlayStation my dear it's Mani Ratnam movie watch it loves ये देखो book ये frontal है एक warm है and cold है in between the rainfalls
Theater and theater. Same. You know, China creates artificial rainfall. Hey, उसको हम लोग rainfall, rain seeding बोलते हैं, पता है artificial rain. And they spray using a light and play. अरे एक बार चाइना ने हंगामा कर दिया, दूसरा आप लोग artificial sun करने जाता है. I remember my flight from Toronto to I think Belgium. We were stuck in this kind of clouds. लगा हम लोग तो गया. लेकिन 15-20 मिनट 45 minutes the flight was rumbling like खटारा गाड़ी कैसे चल. All the family members शांत रहो. भाई मुझे इतना क्या शांत है? एक लिए सब लोग क्या रहा है? अकेले. And after 45 minutes, na, that ping pong bell was done. Then the pilot and the air hostess like, sir, how may I help you? I got 45 minutes के सो लेते थे. अभी हम तो sir ये और से देखते हैं हम भी स्टार्ट बंद कैसे करते हैं. Because only we can see that what is that thundering light. इतना दिख रहा है. मैं बोले ठीक है, लैंड हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम सीधा भगवान की बात करते हैं. How they are zooming in. This is convection. Clouds are becoming bigger. Starts heavy rain. It lasts for many hours, between 20 minutes to an hour. Okay. It's a cumulonimbus clouds. And ये तो होता है consumption and shafts, convection peak. It actually a separate one. This is orographic wave. That is a relief wave. Hello viewers, welcome to a section of physical geography, which deals the formation and features of mountains. I was better under pressure. Did you keep that? Let me put you in industry. रेनफॉल अगर ज्यादा हो तो फ्लड जैसी सिचुएशन बनती है और अगर बहुत ज्यादा कम हो तो वो रीजन ड्राई हो जाता है. बट डू यू नो किसी भी एरिया में रेनफॉल का कम या ज्यादा होना इस पर डिपेंड करता है कि वहां होने वाले रेनफॉल का टाइप क्या है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल. आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में. ओरिजिन के बेसिस पर रेनफॉल को 3 मेन टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है: कन्वेक्शनल रेन, ओरोग्राफिक रेन एंड साइक्लोनिक रेन. पहले बात करते हैं कन्वेक्शनल रेन के बारे में. कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं और ये करंट अर्थ के इंटीरियर में कैसे काम करते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं. अब ये कन्वेक्शन करंट अर्थ के इंटीरियर में ही नहीं, अर्थ के ऊपर भी काम करते हैं. फिर कैसे? जब एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है तो उसे कन्वेक्शन करंट कहा जाता है. वाटर बॉडीज में लैंड सन की रेडिएशन से वार्म हो जाती है और इनके ऊपर मौजूद एयर भी वार्म होने लगती है. वार्म एयर की डेंसिटी काफी कम होती है, जिस वजह से वो लाइट होकर ऊपर की तरफ राइज होना शुरू कर देती है, जिससे इवैपोरेशन का प्रोसेस शुरू होता है. वार्म एयर का ऊपर की तरफ राइज होना ही कन्वेक्शन करंट कहलाता है. अब जब ये वार्म एयर ऊपर पहुंचती है तब अपनी हीट को करना शुरू कर देती है. मीन्स ऊपर का टेम्परेचर कम होने की वजह से अब इस एयर के मॉलिक्यूल्स भी ठंडे हो जाते हैं, जिससे शुरू होगा प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, यानी भाप का ठंडा होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में बदलना, जिससे फॉर्मेशन होता है क्यूमुलस क्लाउड्स का. अब जब क्लाउड्स में मौजूद ये ड्रॉपलेट्स काफी हैवी हो जाते हैं और क्लाउड्स इन्हें होल्ड नहीं कर पाते हैं और होगा प्रेसिपिटेशन, मींस रेन के फॉर्म में वाटर का दोबारा लैंड पर आना. इस तरह का रेनफॉल काफी हैवी, ठंडा और लाइट पीक के साथ होता है, बट बहुत देर तक नहीं. बट इस तरह का रेनफॉल होता कहाँ है? तो इसका आंसर है
इक्वेटोरियल रीजन, जहां सन की डायरेक्ट रेज पड़ने से टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से इस रीजन में इस तरह का रेनफॉल काफी कॉमन है। इसके अलावा कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में भी हमें इस तरह का रेनफॉल देखने को मिलता है, क्योंकि रिवर्स का वाटर भी इवैपोरेट करता है। ये प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन करते हैं, जिस वजह से एयर में मॉइस्चर आ जाता है और इसका रिजल्ट है कन्वेक्शनल रेनफॉल। नेक्स्ट इज ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक वर्ड कनेक्टेड है माउंटेन से। इस तरह के रेनफॉल में माउंटेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसीलिए इसे ओरोग्राफिक रेनफॉल कहा जाता है। अभी हमने जाना कि सन के रेडिएशन से लैंड और वाटर बॉडीज दोनों वार्म हो जाते हैं, जिस वजह से शुरू होता है इवेपोरेशन। अब ये वार्म एयर जिसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है वो राइज होना शुरू कर देती है, बट विंड की डायरेक्शन की वजह से एयर का मूवमेंट ऊपर की तरफ ना होकर हॉरिजॉन्टल होता है। जब एयर लैंड की तरफ फ्लो करना शुरू करती है, बट बीच में माउंटेन्स आ जाने की वजह से अब ये विंड ऊपर की तरफ राइज होने लगती है। हम जानते हैं कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है और इसीलिए माउंटेन्स का टेम्परेचर काफी कम होता है। यहाँ पहुंचने के बाद ये मॉइस्चर लेवल विंड भी ठंडी हो जाती है, जिसके बाद शुरू होता है कंडेंसेशन और इसके बाद प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। पर ये रेनफॉल माउंटेन से उस साइड पर पहुंचने तक Now I've already explained. This is windward and this is leeward. Why they have shown windward with green? Because it makes it more rainfall. Normally it should be green throughout the year. Why this is grey or brown? Because no rainfall. So less rain. मॉइस्चर खत्म हो जाता है, इस वजह से अब ये ड्राई हो जाती है। ये ड्राई विंड दोबारा नीचे की तरफ स्टेट करती है और नीचे पहुंचने के बाद थोड़ा बहुत मॉइस्चर एरिया में मौजूद है, इसे अपने अंदर लेकर दोबारा से वार्म हो जाती है, बट वहाँ इतना मॉइस्चर नहीं होता है जिससे लीवर्ड साइड पर रेनफॉल हो सके। और इसे लीवर्ड जानता है इंडिया की अरावली रेंज, अरेबियन सी से राइज होने वाली मॉइस्चर लेवल विंड जब इस एरिया में पहुंचती है, तब यहाँ सिचुएटेड अरावली रेंजेस पूरे आगे जाने से रोक देती हैं, जिससे अरावली रेंजेस के ऊपर साइड पर रेनफॉल देखने को मिलता है। बट लीवर्ड साइड में रेनफॉल ना होने की वजह से ड्राई रहता है और इसी रीजन में लाई करता है इंडिया का थार रीजन। इसके अलावा इंडिया की वेस्टर्न पार्ट और हिमालयन रेंजेस में ओरोग्राफिक रेनफॉल का एग्जांपल है। इस तरह के रेनफॉल को रिलेट रेनफॉल भी कहा जाता है। लास्ट इज साइक्लोनिक रेन। इस तरह के रेनफॉल का रीजन होता है साइक्लोनिक एक्टिविटी। व्हाट इज साइक्लोन? जब लो प्रेशर जोन की चारों ओर लार्ज स्केल में एयर मास रोटेट करते हैं तो उसे साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि विंड हमेशा हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो ऐसी विंड की जिनके टेम्परेचर में डिफरेंस होता है। एक है वार्म एयर और दूसरी है कोल्ड एयर। क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हाई प्रेशर और लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते हैं। हम जानते हैं कि सन की रेडिएशन पूरे अर्थ पर एक समान नहीं है और अब तक हम ये भी जान चुके हैं कि वार्म एयर कंटेन करती है मॉइस्चर, जबकि कोल्ड एयर ड्राई होती है। अब ऐसा रीजन जहाँ वार्म एयर कोल्ड एयर से मीट करती है उसे कहा जाता है फ्रंट, कुछ इस तरह। बट ये मिक्स नहीं। देखो फ्रंट मतलब both are going side by side. Which is this blue color air Cold air. and which is this red one? Oh. So they are not mixing with each other, but they are just going. Earlier one was they are mixing. Correct? That is cyclone. This is that frontal. होती है, क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। वार्म एयर लाइट होने की वजह से ऊपर की तरफ राइज करती है, जबकि कोल्ड एयर हैवी और ड्राई होने की वजह से नीचे की तरफ स्टेप करती है। अब क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर लो होता है, इसीलिए वार्म एयर जो ऊपर की तरफ राइज होती है उसका टेम्परेचर भी रिड्यूस हो जाता है, जिससे वार्म एयर प्रेजेंट मॉइस्चर कंडेंस होने लगता है और फॉर्मेशन होता है क्लाउड का, जिसके बाद होता है प्रेसिपिटेशन मींस रेनफॉल। तो बेसिकली साइक्लोनिक रेनफॉल तब होता है जब डिफरेंट टेम्परेचर के एयर मास मीट करते हैं। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल। Hope you like this video. For more videos, do like, share, and don't. Can we go ahead? Do you want any other videos? I don't think so, sir. So let's just proceed. Now take up to that page where we are having these, what do you call it? Absolute and relative. I will mark that difference and then we'll move ahead with the chapter. We started far here. Convection. So we're always done.
mainly found in this type of rainfall, mainly found in equatorial regions. Equatorial regions with very high temperature. Equatorial regions with very high temperature. Full stop. It is the rapid increase in temperature arises in the form of convectional current.